future of any country depends on the schooling system, because in the schools the children who will make the future of any country, who will make the country fortunate, are studied. And think about a condition: if the schools are not well maintained, well furnished, and well managed, then what will happen to the future of the children as well as the country? Hello everyone, this is your Amit sir, and I welcome you all in English class. And today's class, we will try to trace the elements that what are the weakness points in the schooling system, as described in the chapter An Elementary School Classroom in a Slum. Students, you know that this poem is written by Stephen Spender, who was a socialist and the person who always stands for the social justice. I had given you the detailed information of the poet Stephen Spender as well as the introduction of the poem. If you have not seen the video, my last video, then go in the description box, find the link of the last video, check out the video first, then come here and watch this video, because today I will give you the line by line explanation of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. Students, this is a very beautiful poem, An Elementary School Classroom in a Slum, and this poem talks about the deprived conditions of the children who lived in the slum area and who are forced to read in a school which is not well managed. One by one we will discuss this poem's line, and we will try to trace the facts given in the poem. The poem starts with a very beautiful line: far, far from gusty waves this children's faces. The poet, in the very first line, introducing the children as a gusty face. Gusty face, waves means the deprived, sad, and not well maintained condition. Like rootless weeds, the hair was torn round their pallor. The poet is expressing that the hair, who are the future of some places and the country, here means not the literally bal, it means the future. Okay, and future is around little pallor and limited in some certain place. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunned unlucky hair. यहाँ पर जो है the poet is expressing the condition of the children कि tall girl with down head, उसका सिर झुका हुआ है. The paper seeming boy, एक बच्चा है who is looking like a paper. पेपर क्यों कह रहा है? Because he is not much nutrient, उसको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, and body is not so developed. Of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. And the poet is saying कि twisted bones, उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं, were not so maintained and they are in a very bad condition. His lesson from his desk at back of the dim class, एक अंधेरा क्लास है, उसी में they are getting the lessons. Not so well maintained room, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. वहीं पर एक बच्चा है जिसकी आंख में एक ड्रीम है, and he is unnoted. And not only that boy, all the students of that classroom are unnoted. किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है. Of squills game in tree room other than this.
सब उसी तरह से एक स्क्विल की तरह एक ही रूम में लिमिटेड हैं. दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अटेंशन ऑफ द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट. ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, देखो यहाँ पर दीवार को खट्टा बताया गया. यू नो वाई? बिकॉज द वॉल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम. क्लासरूम के दीवार जब अच्छे होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, एंड देयर आर द डिफरेंट पोस्टर्स एंड पिक्चर्स ऑन द वॉल, then the automatically the mind develops to see the different colors from the wall. But walls are looking like sour. Sour मतलब खट्टा, मतलब बिल्कुल गंदा है. डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर एक शेक्सपियर का बस्ट इमेज लगा हुआ है. शेक्सपियर एवरीवन नोज, फादर ऑफ ड्रामा. तो उसका एक हेड लगा हुआ है. क्लाउडलेस एट डॉन. डॉन का मतलब सुबह होता है, लेकिन वो क्लाउडलेस है. क्लाउडलेस मतलब धुंधला है. सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज. सब सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नथिंग इज बीइंग हैपेंड इन दिस. ब्लेड, बैलिड, फ्लावरी, टायरलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, एंड एवरीथिंग इज जस्ट ब्लेंडेड. और वहाँ पर एक ओपन हैंडेड मैप है. ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि वहाँ पर एक मैप भी बना हुआ है क्लासरूम की दीवार पर, बट दैट इज़ ओपन हैंडेड, मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर पिक्चराइजेशन नहीं है. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दिस. और वहीं पर जो है सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है इन अ वेरी बैड कंडीशन. चिल्ड्रेन, these windows, not these map, not this map, their world. चिल्ड्रन इन्हीं विंडोज़ के आसपास में बैठे हुए हैं और उनके लिए दुनिया में कोई मैप इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बिकॉज दैट लिमिटेड 4 वॉल्स आर देयर वर्ल्ड. उनका वर्ल्ड है. वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग. इसी 4 दीवारी में उनका फ्यूचर जो है वो एक फॉग से पेंट हो गया. फॉग से पेंट होना मतलब धुंधला हो गया. एवरीथिंग इज जस्ट ब्लर एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर फ्यूचर. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई. एक नैरो स्ट्रीट है, पतली गली है, एंड एवरी वन इज जस्ट लिमिटेड इन दैट प्लेस. एंड उनकी जो स्काई का जो रास्ता है, यानी सफलता की ओर जाने का जो रास्ता है, इज अ वेरी नैरो, and there are not so opportunities to get all the things. Far from rivers, caps and stars of words. उनके लिए रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स सब जो है वो सिर्फ शब्द हैं, वो उनको अचीव नहीं कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, when you are reading this poem, you must think that the lines and the words of the poem are giving you the real meaning of themselves, but indirectly they are presenting the different view of the condition. Means this is a kind of metaphor, और metaphor इस poem में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है. figure of speech में metaphor सबसे ज़्यादा यूज हुआ. I will give you the description of the different figure of speeches used in this poem. Surely Shakespeare is wicked. शेक्सपियर को यहाँ पर गंदा बताया गया. यू नो वाई? बिकॉज ही ऑलवेज ग्लोरीफाई द पीपल फ्रॉम द वेरी हाई क्लास. द मैप इज बैड एग्जाम्पल, क्योंकि मैप इन लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है. वॉट विल दिस डू टू सी द वर्ल्ड थ्रू द मैप? मैप देख करके इन लोगों को करना क्या है? बिकॉज टू कम आउट फ्रॉम दिस बैड कंडीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. विथ शिप्स एंड सन and love tempting them to steal. उनके लिए ships, sun, love, everything had been steal. सब चोरी हो चुके हैं, उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं. 4 lives that silly turn in their cramped holes. They are limited in the cramped holes. छोटे से होल की तरह की दुनिया में है. From fog to endless night, one their slag heap. These children are limited to live in that kind of foggy condition where skins peeped through by bones
एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। उनके लिए जो है ना तो गुड फूड अवेलेबल है एंड ना तो उनके लिए कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट्स कंडीशन अवेलेबल है। With mended glass like bottle bits on stones, all of their time and spaces are foggy slum. They all are forced to live in that kind of slum area, and they have not means of education and the proper things to enjoy the childhood. So blot their maps with slums as big as doom. वो पोइट कहता है स्टीफन स्पेंडर कि इस सारे मैप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, दे आर नॉट यूजफुल फॉर देम अनलेस द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर द मैप becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. द पोइट इज सेइंग जब तक बाहर से कोई विजिट करने नहीं आता है तब तक इनका कंडीशन ठीक नहीं होगा. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और जब कोई आएंगे तो यही मैप जो है उनके लिए विंडो बन सकते हैं और इन विंडोज को यूज करके दे कैन कम आउट फ्रॉम दिस प्लेस. ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक ओ ब्रेक का मतलब है कि बार बार रिपीटेशन है ब्रेक ओ ब्रेक का, और इस रिपीटेशन के थ्रू द पोएट इज ट्राइंग टू से टू डिस्ट्रॉय ऑल द things which are forcefully separated them from their ideal childhood. उनके आइडियल चाइल्डहुड से उनको जो भी अलग कर रहा है उन सबको ब्रेक करने के लिए कह रहा है पोइट. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजा ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स with the white and green leaves open. History theirs whose language is sun. The poet is saying that उनको फ्री छोड़ दो, उनके लिए सारे अवसर उपलब्ध करवाओ, then they will change the history. You know why? Because history theirs whose language is sun. जिसकी आवाज में एक सन की गर्माहट होती है, उसी के लिए जो है हिस्ट्री है. Student, what the summary of this poem? Summary of this poem is that the school is located in a slum area. The poet wants everybody attention to the children. Poet wanted the life of those students improve. He wanted them to get trained in order to become good citizens of our country and not the criminals. The poet is very much concerned for those children who are depriving their childhood in some limited slum area. The writer of this poem is Stephen Spender. Everyone knows that. He describes the communal inequalities. हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जिसके पास सारे साधन अवेलेबल हैं और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है. एंड दिस इज द वेरी पुअर कंडीशन एंड द पोएट, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज फोकसिंग ऑन दैट थिंग्स. What is the theme of this poem? An elementary school classroom in a slum is a very beautiful poem which talks about the social injustice and class inequality. Social injustice मतलब समाज में जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, पुअर पीपल के साथ, and class inequality. Students rich are at the top, poor are at the bottom, and middle class is a destroyed condition. So it's a very important to vanish all the class inequality and social injustice, because it's a very important to provide everyone the fair chance. Now this is the time to understand the figure of speeches. One by one I am going to explain you. The first figure of speech, simile कब यूज करते हैं? जब दो चीज़ों में like और as के साथ कंपेयर हो रहा हो. जैसे like rootless weed is the example. The second figure of speech is metaphor. पूरा पोएम ही मेटाफोरिक पोएम है. फर्स्ट इज पेपर सीमिंग बॉय. एक बच्चा पेपर कैसे हो सकता है? सौर क्रीम वॉल्स, दीवारों को खट्टा कैसे बताया जा सकता है? ये सब उसके कंडीशंस को बताने के लिए एक डिफरेंट वर्ड्स लिए गए हैं. नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ लेड स्काई. जो सड़क है वो सील कैसे किया जा सकता है? स्काई
उसके बाद एजोनेंस उसको कहते हैं जब एक वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे ब्लेड, फ्लोरी, ट्रॉलिस, वैली, सब में जो है ई का रेपिटेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद अल्यूजन का यूज़ तब होता है जब हम किसी दूसरे फेमस पॉइंट को, किसी की कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, जैसे शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर इज़ वेरी फेमस। ट्रॉलिस वैली, ट्रॉलिस एक बहुत ही फेमस वैली है। उसके बाद रिपीटेशन, फार स्टार्टिंग वाले लाइन में भी रिपीट हुआ है बार बार, और बीच में भी कहीं कहीं रिपीट हुआ है फार 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 करके। एनाफोरा का मतलब होता है जब पोएम का कोई दो लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तो जैसे रन अज्यूरे, और फिर दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा था रन नेक्ड। तो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। हाउ मेनी फिगर ऑफ स्पीचेज हैव बीन गिवन इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में कितने फिगर ऑफ स्पीचेज हैं? ठीक है, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेज यू कैन फाइंड इन दिस पिक्चर. Now, this is the time to get the conclusion of an elementary classroom in a slum is very clear. The poem is talking about the social injustice, and the poet is very much concerned about to get the life better of the deprived people who are living in the slum, and especially the children who are forced to get the limited means of development. So this is the final page. I hope you have understood everything, and in my next class you will get the all descriptions of the question and answer. Till then, have a nice day, enjoy learning, goodbye.